गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल अपन ने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया है AS16 कंप्लीट करके, राइट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट की डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, दोनों मेथड हमने समझ लिए। और फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो गया था अपना, एंड वी आर सपोज टू स्टार्ट कंप्लीट रिमेनिंग टू प्रॉब्लम्स। सो लेट्स सॉल्व थर्ड वन फर्स्ट। सेकंड कंप्लीट हो गया था ना। एक बार बताओ तो, लास्ट के फिगर्स एंड में मैंने बोला था आप करो बोल के। What would be the cash flows from investing activities? Net cash flows. 1 lakh outflow. 1,45,000 का outflow. Then financing activities, outflow, inflow. So what would be net increase or decrease? Increase. Opening cash and cash equivalents कितना था? 10,000. So closing would be 20,000. हो गया था ये complete? Any problem in this? Problem number third. Following are the balance sheet of Sneha Limited as at 31st March 2023 and 31st March 2024. Sundry creditors, bills payable, bank overdraft, provision for taxation, reserves, profit and loss account, share capital, cash, sundry debtors, sundry advances, stock, land and building, plant and machinery, goodwill. During the year ended 31st March 2024, an interim dividend of 26,000 was paid. Assets of another company were purchased for 60,000 payable in fully paid shares of the company. These assets consist of stock 21,640, machinery 18,360 and goodwill 20,000. In addition, sundry purchases of plant were made totaling 5,650. Income tax paid during the year amounted to 25,000. Net profit for the year before tax was 65,130. You are required to prepare cash flow statement for the year 23-24. Problem number third, page number 15. Sneha Limited cash flow statement. For the year ended 31st March 2024. Regular 1.5 page format.
Particulars rupees. Then working notes. Working notes. वर्किंग नोट्स में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट. Provision for taxation account. Five, 6 lines. Then profit and loss account. Then plant and machinery account. स्टॉक अकाउंट. नॉर्मली हम लोग स्टॉक अकाउंट बनाते नहीं, बट इस प्रॉब्लम में ना स्टॉक में एक नॉन कैश एडजस्टमेंट है और उसके लिए स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा. हो गया.
Shall we start? Following are the balance sheets of Sneha Limited as at 31st March 2023 and 31st March 2024. Sundry creditors, bills payable, wait, because these are working capital changes. These are current liabilities. Then bank overdraft. Bank overdraft is negative cash equivalent. ये नेगेटिव कैश इक्विवेलेंट है तो लेंगे इसको भी वेट. देखो जब पॉजिटिव बैंक बैलेंस आता है तो आप उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेते हो, तो ये बैंक बैलेंस ही है ना, सिर्फ निगेटिव है. So it will be negative cash equivalent. We will consider it when we go for end of the cash flow statement where we consider cash and cash equivalents at the end and at the beginning. Provision for taxation account है. Buy balance brought down 40,000. Two balance carried down 50,000. Reserves opening closing same balance, so there is no change in reserves. P&L account buy balance brought down 39,690. Two balance carried down 41,220. Share capital opening balance is 2 lakhs, closing balance is 260. Prima facie immediately we come to the conclusion that there is addition of 60,000, but no, there is one adjustment relating to that. Read the second adjustment. The assets of another company were purchased for 60,000 payable in fully paid shares of the कंपनी. 60,000 में कुछ शेयर्स खरीदे जिसके बदले में कंपनी के शेयर्स इशू किए, मतलब शेयर कैपिटल इशू हुआ क्या? तो आंसर है हाँ, इशू हुआ है शेयर कैपिटल, बट उसके बदले में कैश आया क्या? एसेट्स आए ना. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनफ्लो बोल के आएगा क्या? इशू ऑफ शेयर कैपिटल. अब इनफ्लो है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? कैश नहीं आया, एसेट्स आए, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा. कैश वेट, इट इज कैश इक्विवेलेंट. Sundry debtors weight, sundry advances weight, stock weight, land and building. Opening कितना था? 148,500, closing 144,250. अभी बाकी कुछ बोला ही नहीं बेटा, सेल वगैरह. तो ऑब्वियसली लैंड एंड बिल्डिंग है तो इट विल बी डेप्रिसिएशन. तो बाकी कोई एडजस्टमेंट है नहीं उसमें, तो मैंने इसका जानबूझ के अकाउंट में नहीं बनाया, तो डिफरेंस डायरेक्टली डेप्रिसिएशन बोल के लेना है. गो टू start of cash flow statement. Cash flows from operating activities. Cash flows from operating activities. Starting point is net profit before tax. Keep it blank. एडजस्टमेंट्स में डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. कितना डिफरेंस है देखो, 4250 बरोबर.
4250 प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 112,950 बाय बैलेंस carried down 116,200 गुडविल ओपनिंग में कुछ नहीं, क्लोजिंग में 20,000 आ गया है। अभी नॉर्मली उल्टा रहता है, ओपनिंग का बैलेंस ज़्यादा रहता है, क्लोजिंग का कम रहता है, सो दैट इज राइट ऑफ गुडविल। अब ये गुडविल तो ड्यूरिंग द ईयर आया है, तो काय का आया है, वही सेकंड वाली एडजस्टमेंट। द एसेट्स ऑफ अनदर कंपनी वर परचेस्ड फॉर 60,000 पेएबल इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ द कंपनी। दीज एसेट्स कंसिस्ट ऑफ स्टॉक 21,640, मशीनरी 18,360 एंड गुडविल 20,000। तो ऐसे कुल मिला के 60,000 होता ही है, स्टॉक मशीनरी एंड गुडविल। तो वो गुडविल भी सर आया है, उसका इम्पैक्ट अपने कैश फ्लो पे आएगा क्या कुछ? डज इट इन्वॉल्व एनी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो? नो। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2024 एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 26,000 वॉज पेड। 26,000 का इंटरिम डिविडेंड पे हुआ है। डिविडेंड इज ऑलवेज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। P&L अकाउंट to interim dividend $26,000. Where will you take this outflow? फाइनेंसिंग में आएगा, लास्ट हाफ पेज। Cash flows from financing activities. Under that, payment of interim dividend. $26,000 आया। The assets of another company were purchased for 60,000 payable in fully paid shares of the company. These assets consist of stock, machinery and goodwill. एंट्री बोलो ना बेटा, ये assets acquire किए उसके बदले में shares issue किए। Stock account debit, machinery account debit, goodwill account debit, to equity share capital account. Go to plant and machinery account, debit side, to इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 18,360। सिमिलर वे स्टॉक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का कितना दिया हुआ है? 111,040 एंड बाय बैलेंस कैरीड डाउन 97,370। तो स्टॉक में कितना एडिशन होगा विदाउट कैश टू इक्विटी शेयर कैपिटल? ₹21,640 आया। गुडविल का अकाउंट बनाया नहीं, रिक्वायरमेंट भी नहीं है, 20,000 का गुडविल है जो दिख रहा है बैलेंस शीट में। उसी एडजस्टमेंट में एंड में लिखा है इन एडिशन सन्ड्री परचेसेस ऑफ प्लांट वर मेड टोटलिंग
5650. So sundry purchases of plant entry. Plant account debit to cash or bank account to cash oblique bank account 5650. अब मेरे को बोलो ये 5650 का आउटफ्लो कहाँ आना चाहिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लास्ट 5-6 लाइन्स 6-7 लाइन्स ऑफ फर्स्ट पेज, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज additions to plant, outflow of 5650. Income tax paid during the year amounted to 25,000 rupees. Provision for taxation debit side to bank account. ₹25,000 to bank account 25,000. अब ये आउटफ्लो है, कहाँ आता है टैक्सेशन का आउटफ्लो? ऑपरेटिंग में एंड में पेंडिंग रखो. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स डायरेक्टली दिया है अपने को प्रॉब्लम में, बट एनीवे हम P&L अकाउंट बना ही रहे तो वहाँ पे आएगा ही वो. चलो दिए हुए एडजस्टमेंट्स तो हो गए, एक एक अकाउंट क्लोज करते हैं. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, ओपनिंग था 40,000, पे हुआ 25,000, तो 15,000 का एक्सेस प्रोविजन है ओपनिंग का, जबकि क्लोजिंग मुझे 50,000 चाहिए. तो हाउ मच एडिशनल प्रोविजन आई विल मेक दिस ईयर? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर. $25,000, 35,000. P&L account debit side to provision for taxation. P&L account वेट. अब प्लांट एंड मशीनरी में देखो बेटा, ओपनिंग बैलेंस है, इस साल जो एडिशंस हुए वो आ गए, क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्या मिसिंग रहेगा? ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन ही मिसिंग रहेगा. बाय डेप्रिसिएशन एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर. $20,000. क्या करो इसको? ऑपरेटिंग में ऐड, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20,760. अगला अकाउंट स्टॉक. अब मेरे को बोलो ओपनिंग प्लस ड्यूरिंग द ईयर जो वो एक्वायर किया, इसका टोटल कितना आ रहा है? 1,11,040 प्लस 21,640, 132,680. जबकि क्लोजिंग बैलेंस अगर आप देखोगे तो कम हो गया है कि बढ़ गया है? कम हुआ है ना. सो बाय डिक्रीज इन स्टॉक कितना डिक्रीज है ढूंढो.
asterisk mark balancing figure. $35,310. अब ये हम डायरेक्टली बैलेंस शीट से डिक्रीज इन स्टॉक क्यों नहीं लिए? क्यों तो एक एडजस्टमेंट ऐसा है जो नॉन कैश आइटम का है, इसलिए अकाउंट बना के ढूंढा कि कितना डिक्रीज हुआ है. समझा? गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लोज इट, यू विल गेट बाय नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. कितना आया? 62,530. ये डिफरेंस क्यों आ रहा है मैं बोलता हूँ आपको. ये डिफरेंस आने का कारण दिया हुआ प्रॉब्लम में 65,130 है ना. हाँ, उसका रीज़न ये है कि ओरिजिनली प्रॉब्लम में इंटरिम डिविडेंड के ऊपर 10% टैक्स था. 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था जो 2021 के बजट में निकल गया. 2,600 का ही डिफरेंस है ना. देखो अपना आया हुआ आंसर कितना है? 62,530 प्लस 2,600 करो, है ना. हाँ, तो वो अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है. एक काम करो, प्रॉब्लम में जो नेट प्रॉफिट की फिगर दी है ना वो चेंज कर दो, 62,530 करो उसको, प्रॉब्लम में दी हुई. और वैसे भी वो इररिलेवेंट अपने लिए, अपन जो कैलकुलेट करेंगे वही लेने वाले ना अपन. तो प्रॉब्लम में दी हुई फिगर जो है 65,130 की, वो चेंज करके 62,530 करो. कर दिए? Come to the main cash flow statement. Net profit before tax 62,530. Operating cash flows before working capital changes $87,540. वन बाय वन एसेट साइड से जाओ, देखते जाओ क्या क्या है. डेटर्स इंक्रीज है डिक्रीज है? डिक्रीज इन डेटर्स. डिक्रीज इन डेटर्स 12,550. क्या करूं? ऐड. डिक्रीज इन सन्ड्री एडवांसेस 1580. Then decrease in stock वो कितना है? अभी हमने कैलकुलेट किया ना, 35,310, 35,310. देन क्रेडिटर्स में इंक्रीज है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स
1635. 1635. Decrease in bills payable. बोलो बेटा. 22,255 आउटफ्लो. बैंक ओवरड्राफ्ट तो अपने को नेगेटिव कैश इक्विवेलेंट बोल के लेना है. हो गया. ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर टैक्स. वन लाख 116,360 less income tax paid during the year. How much income tax is paid? 25,000 outflow, and therefore net operating cash flows post tax. $91,360. Net cash flows from investing activity. $5,650. Net cash flows from financing activities. Outflow of 26,000. Net increase oblique decrease in cash and cash equivalents. $59,710. Cash and cash equivalents at the beginning. Cash and cash equivalents at the beginning. अभी देखो 2,500 का पॉजिटिव बैलेंस तो था ही, बट बैंक ओवरड्राफ्ट 59,510 है. तो ये देखो कैसे होगा. 2,500 माइनस 59,510. तो व्हाट विल बी ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स?
57 negative 57010. Therefore cash and cash equivalents at the end हो रहा क्या टैली कितना आया 2700. सबका आया Any problem in this? Fourth problem. The following information was provided by PQR Limited for the year ended 31st March 2024. Gross profit ratio was 25% for the year, which amounts to rupees 3,75,000. Company sold goods for cash only. Opening inventory was lesser than closing inventory by 25,000. Wages paid during the year rupees 5,55,000. Office expenses paid during the year 35,000. Selling expenses paid during the year 15,000. Dividend paid during the year 40,000. Bank loan repaid during the year 2,05,000 including interest. Trade payables on 31st March 2023 were 50,000 and on 31st March 2024 were 35,000. Amount paid to trade payables during the year 6,10,000. Income tax paid during the year amounts to 55,000. Provision for taxation at the end 30,000. Investments of 8,20,000 sold during the year at a profit of 20,000. Depreciation on furniture amounts to 40,000. Depreciation on other tangible assets amounts to 20,000. Plant and machinery purchased on 15th November 2023 3,50,000. On 31st March 2024 rupees 2 lakh 7% debentures were issued at face value in an exchange for a plant. Cash and cash equivalents on 31st March 2023 rupees 2 lakh 25,000. Prepare cash flow statement for the year ended 31st March 2024 using direct method का cash flow statement and calculate cash flow from operating activities using indirect method. Indirect method के सिर्फ operating activities के cash flows ढूंढने हैं, direct method का पूरा cash flow statement बनाना है. तो 10 मार्क के लिए थोड़ा लेंदी हो जाता है सम. डायरेक्ट मेथड भी करो फिर इनडायरेक्ट का ये कैलकुलेशन भी दिखाओ. एग्जाम में आया था. Problem number 4, page number 15. PQR Limited cash flow statement bracket direct method for the year ended
31st March 2024. One of full page format. Particulars rupees. करें स्टार्ट. डायरेक्ट मेथड में बेटा सीधे सीधे इनफ्लोज आउटफ्लोज लेते जाना है. हाँ, यहाँ पे बाकी अब नेट प्रॉफिट का इसका कोई कंसर्न है नहीं. वो जब अपन इनडायरेक्ट मेथड में जाएंगे तब. स्टार्टिंग विल ऑलवेज बी विद कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. Cash flows from operating activities. इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली एनालाइज करने भी आना चाहिए क्या दिया है प्रॉब्लम में. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वॉज 25% फॉर द ईयर विच अमाउंट्स टू 3,75,000. जीपी रेशियो दिया है और अमाउंट दी है ग्रॉस प्रॉफिट की. इसका मतलब इस पे से सेल्स निकल सकता है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जीपी रेशियो? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100. और मुझे जीपी रेशियो कितना है वो दिया है, और जीपी रेशियो का जीपी का प्रॉफिट नंबर दिया है कितना है, नंबर कितना अमाउंट है. तो आई कैन कैलकुलेट सेल्स 3,75,000 डिवाइडेड बाय 25%. कितना आता है? 15 लाख रुपए. नीचे सेकंड में लिखा है कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली. तो इसका मतलब पूरा पूरा कैश सेल्स है. सो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. Sale of goods for cash. If you want, you may show the calculation there in bracket. 3,75,000 divided by 25%. 15 लाख का इनफ्लो बरोबर. 15 lakhs इनफ्लो. ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 25,000. इससे अपने को डायरेक्ट मेथड में कोई फर्क पड़ता है क्या? डायरेक्ट मेथड में स्टॉक में क्या चेंज हो रहा है उससे कोई लेना देना ही नहीं है, अपने लिए रिलेवेंट नहीं है. डायरेक्ट मेथड में, इनडायरेक्ट में अपने को यूज करना पड़ेगा वो. देन वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर. पेमेंट ऑफ वेजेस. Outflow of 5,55,000. Office expenses paid during the year. Payment of
ऑफिस एक्सपेंसेस कितने पे हुए? 35,000. Selling expenses paid. Payment of selling expenses 15,000. डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर. डिविडेंड पेड कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा. बैंक लोन रीपेड कहाँ पे आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा. ट्रेड पेबल्स एट द बिगिनिंग एट द एंड, वैसे उसका अपने को यहां पे कोई रिलेवेंस नहीं है. अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल्स, यस. पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स. कितना पेमेंट हुआ है? 6,10,000 आउटफ्लो. इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, दिस वी नीड टू कंसिडर हियर ओनली, बट एट द एंड मिलेंगे ये, इसको पेंडिंग रखो. इन्वेस्टमेंट्स 8,20,000 सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, ये इन्वेस्टिंग का इनफ्लो रहेगा. डेप्रिसिएशन डायरेक्ट मेथड में नहीं आने वाला. प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड ये जाएगा इन्वेस्टिंग में. 7% डिबेंचर्स इशूड इन एक्सचेंज फॉर प्लांट, ये भी नहीं. और कुछ है? नहीं. सो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर टैक्स. कितना आता है? पॉजिटिव इनफ्लो ना. 2,85,000 लेस इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर. कितना पे किया है? 55,000. So net operating cash flows after tax. नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स बताओ. 2,30,000. आया? Cash flows from investing activities. इन्वेस्टिंग में क्या क्या है? Investments of 8,20,000 sold during the year at a profit of 20,000. So sale proceeds of investments. कितने रे? 8,40,000 का इनफ्लो आएगा ना ये तो. डेप्रिसिएशन यहां नहीं कंसिडर होने वाला. प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड, एडिशंस टू प्लांट एंड मशीनरी. Additions to plant and machinery
आउटफ्लो ऑफ 3,50,000। मेरे को बताओ ये जो 16th एडजस्टमेंट है उसका इफेक्ट आएगा क्या? डिबेंचर्स इशू किए है और उसके बदले में प्लांट लिया है, ये तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो गया ना, बार्टर एक्सचेंज हो गया ये। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा क्या ये? नहीं। सो नेट कैश फ्लोज फ्रॉम investing activities 4 lakhs 90 4,90,000 4,90,000 आया। देन कैश फ्लोज फ्रॉम क्या है उसमें? डिविडेंड पेड, हाउ मच डिविडेंड इज पेड? आउटफ्लो ऑफ 40,40,000 बराबर। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन ब्रैकेट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना? 2,05,000 का आउटफ्लो बरोबर। अलग अलग दिखाना है तो अलग अलग भी दिखा सकते तुम। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 5,000 और कुछ है? सो नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आउटफ्लो ऑफ 2,45,000 net increase oblique decrease in cash and cash equivalents फोर लाख cash and cash equivalents at the beginning। बताओ दिए हुए प्रॉब्लम में 2,25 therefore cash and cash equivalents at the end। बोलो बेटा। आया?
अब इनडायरेक्ट मेथड से अपने को ऑपरेटिंग कैश फ्लोज सिर्फ दिखाना है, बट उसके लिए मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगेगा ना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बगैर कैसे होगा? अब वो फिगर डायरेक्टली तो दी नहीं प्रॉब्लम में, वो ढूंढनी पड़ेगी अपने को। वी नीड टू फाइंड इट आउट। मेरे पेन की इंक खत्म हो गई है, तो जब तक वो रिफिल होता है डिक्टेट करता हूँ, लिखो। क्या क्या बोलना ऋतुराज, काय म्हणला? ascertainment of net profit before tax. Ascertainment of net profit before tax. Right hand side corner, rupees. Right hand side corner, rupees. लिखो ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 3,75,000। तो दिया वही था ना प्रॉब्लम में। एड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इनडायरेक्ट इनकम है ना ये। एड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कितना? 20,000। सब टोटल without Kelsey, I'll tell you, it is 3,95,000. लेस वन बाय वन। अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस लेस करूंगा क्या? क्यों नहीं? जीपी है ना, जीपी में से तो ऑलरेडी वेजेस लेस होके आया है ना। लेस नंबर 1 ऑफिस एक्सपेंसेस, इनर कॉलम 35,000। ऑफिस एक्सपेंसेस इनर कॉलम 35,000। लेस नंबर 2 सेलिंग एक्सपेंसेस 15,000। डिविडेंड लेस नहीं करूंगा बेटा मैं, बिकॉज डिविडेंड इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आई वांट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं टैक्स भी लेस नहीं करने वाला। क्या लेस किया तुमने अभी? सेलिंग एक्सपेंसेस 15,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 5,000। 5,000। depreciation on furniture, depreciation on furniture 40,000। depreciation on other tangible assets, depreciation on other tangible assets 20,000। 20,000। आउटर कॉलम एक्सपेंसेस का टोटल करो। 1,15,000। 1,15,000। and therefore net profit before tax
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना? 2,80,000, 2,80,000। और मुझे लगता है कि अभी तुम ट्राई करो, इनडायरेक्ट मेथड आना चाहिए तुमको, बनाओ। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करना है, कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है, आ जाएगा, करो। 10 मिनट देता हूँ।
डन गाइज, हो गया क्या? यस। बोलो क्या क्या किया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 2,80,000। एडजस्टमेंट्स में क्या क्या किए? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, हाँ कितना है? एडेड बैक। $5,000। देन depreciation on furniture 40,000, other intangible assets 20,000, प्रॉफिट कितना? आउटफ्लो रहेगा, आउटफ्लो रहेगा ना? और हो गया? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3,20,000 बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट? हाँ, फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बताओ लाइन से। इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना? इट विल बी आउटफ्लो। देन ट्रेड पेएबल्स डिक्रीज है कितना? 15,000 आउटफ्लो। हाँ, और कुछ है? अच्छा, डेटस तो है ही नहीं ना। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर टैक्स 2,85,000 एंड टैक्स पेड, सो इट विल बी 2 लाख। हो गया टैली? समझा सबको? गया कैश फ्लो दिमाग में? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? नो। विद दिस वी फिनिश विद कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो। कुछ डाउट है तो पूछो बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है? ऑनलाइन गाइज एनी डाउट? नो। ओके गाइज, टुडे वी विल स्टॉप हियर ओनली। ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजर ही मैं हूँ और शुरू हो चुका है, सो आई नीड टू गो देयर एंड टू बी प्रेजेंट देयर। सो कैश फ्लो कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल गो फॉर फर्दर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड देन नेक्स्ट टॉपिक. So now we will meet directly on Monday. Tomorrow is Sunday. Sunday is no lecture, so Monday we will meet. And those who are eligible for blood donation, let's go and donate the blood. चलो शुरुआत करते हैं. Thank you guys. Bye bye.